session will relate to legal writing and research, and the second will relate to case analysis and journalism and how we do them. So let me begin the session. Please let me know once my screen is visible. Is my screen visible? Yes, Okay, ma'am. okay, Yes, great. ma'am. Thank you so much. So let us begin the session. Uh, just give me a moment. I'm so sorry, I had some network issue. So yeah, let's begin the session. So the first session is on legal research. So what is legal research and what is research in general? Research का basically मतलब यही होता है that you have some knowledge and you have some concept in mind. So using that particular concept, you develop a new concept or you come up with a completely new theory. So the 2 points that I have mentioned are that investigation or experimentation aimed at the discovery and interpretation of facts, revision of accepted theories or laws in light of new facts or practical applications of such new or revised theories or laws is what is legal research. So basically, simple words में हम बोले तो when we dig further in deeper into a topic of something that is already available with us, some knowledge that is already available with us, to revise the theories that we already know, or to come up with new particular concepts, then that is known as legal research. And what is research? Research basically is the creation of new knowledge or the use of existing knowledge in a new or creative manner so as to generate new concepts, methodologies, and understandings. So this is what research and legal research are. Research को हम basically समझे तो it is the creation of new knowledge or the use of existing knowledge in a new way. And legal research is basically use of or the creation of legal knowledge and interpretation of facts in a newer manner to understand the concepts better. Now, when we talk of types of research, पहले हम 8 तरह के research की बात करेंगे and then we'll go and delve deeper into 2 specific kinds of research that are doctrinal and non-doctrinal, which I believe are the most important for law students to understand. So, firstly, let's start with descriptive legal research. Descriptive legal research systematically records and reports observations to identify trends, patterns, and general characteristics without going into the causation of things. If you also see on the screen, it basically describes the current state of a phenomenon or a concept without focusing on what has happened or why it has happened. That is, without relating to the problem or without understanding the reason behind it. So, for example, of descriptive legal research can be when we do a national census and collect data on various demographic factors such as the age, gender, income, education level, and occupation of people. So, what we are doing, we are collecting the data, but we are not going into the causation of why this demographic is more or why this demographic is less. That is what is descriptive research. Then we have analytical research. Analytical research kind of is the opposite of descriptive research because in this we try to understand the underlying relation and underlying causes between variables, often by using statistical techniques. So, as you can see on the screen, analytical research critically examines existing facts and information to discern underlying patterns or implications, aiming to understand the deeper meaning behind a legal phenomenon. Then we have applied and fundamental research. So, applied research basically is problem oriented, seeking practical solution to real life problems.
So for example, we have a problem. Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt you between, but slides are not changing. Okay. Let me reconnect. I believe I have some network issue. Just give me a moment, guys. Rishabh, could you please tell me which slide is visible on the screen right now? It's types. Okay, great. So we were on, if you want, I can repeat from descriptive legal research, and I believe it's better to do that. So let's start again. Descriptive legal research and analytical legal research. So these two concepts are completely opposite of each other. We can say that because in descriptive research, what we do is we research systematically on what the current state of a phenomenon is, and we do not go into what the particular reasoning of why a particular thing is happening, or what was the reason, what was the causation of a particular phenomenon. So descriptive legal research, it systematically records and reports observations to identify trends and patterns. One of the best examples could be the national census that happens periodically, where what the government does is it collects data on various demographic factors such as age, gender, income, education level. So what they're doing, they're collecting information, they're making a report, right? They're not going into why this particular demographic is more or why that particular demographic is more, and so on and so forth. So they're just collecting the data and presenting it, and that is what descriptive research is. But when we talk of analytical research, in analytical research, we examine the facts and information that we have collected, and we try to understand the underlying patterns or implications. So how it is opposite, because in descriptive we do not try to understand the cause of things, but in analytical we understand the underlying principle and relationship between two variable factors. So for example, we take a topic of socioeconomic status and access to healthcare. So, what we do in analytical research is we try to understand how one's background, say if they're from uneducated families and are earning low incomes, if they're from a family that is earning just enough to survive, or if they're from a family that is that has multiple people who are working and they have high paying jobs, how these particular factors are affecting the healthcare that they get. That is what analytical legal research is. We have our facts, then we try to understand how one thing relates to another, and how one thing is uh, you know the underlying cause. Say for example, I say that the people who earn low income are not getting access to healthcare, so I try to understand what is the cause of that. So that is what analytical legal research is, in which we try to understand the underlying patterns or implications. Then there is applied legal research and fundamental legal research, which again are two completely opposite concepts. So applied research seeks practical solution to real world problems, operating within practical context to address pressing issues effectively. सो इन सिंपल वर्ड्स, अप्लाइड लीगल रिसर्च का मतलब ये है कि आप जो रिसर्च करते हो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है. दैट इज यू हैव अ प्रॉब्लम and you're trying to solve that problem by coming up with solutions. That is what applied legal research is. So for example, we take the concept of solar energy, right? So we are saying that we cannot keep exploiting the minerals of earth for energy purposes, and we want to come up with more efficient ways to generate energy. तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि हम अर्थ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं.
अब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज कमिंग अप विद न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मॉडल्स टू यूज सोलर एनर्जी, विंड पावर, वाटर पावर एंड सम अदर रिसोर्सेज एज वेल. तो वो जो रिसर्च होगी दैट विल बी अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि हमारे पास एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. देन वी हैव फंडामेंटल रिसर्च या फिर बेसिक रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च इज मोर लाइक क्यूरियोसिटी ड्रिवन, बिकॉज इसमें हम बस अपनी नॉलेज एक्सपैंड करना चाहते हैं. So fundamental research aims to advance theoretical understanding, focusing on expanding knowledge rather than immediate application. So how is it opposite of applied? Because in applied, we have a problem and we're trying to do research to come up with solutions to that problem. But in fundamental or basic research, what we are doing is we have a theory or we have a concept in mind and we just want to broaden our understanding on that. So we are not going into क्या हमारी जो रिसर्च है वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है रियल वर्ल्ड में. दैट इज नॉट अ क्वेश्चन इन फंडामेंटल लीगल रिसर्च. व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू एक्सपैंड ऑन नॉलेज एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस. Then we have the other four kinds. And Rishabh, if you could kindly please confirm that this slide has changed. Yes, ma'am. It's changed. Okay, great. Thank you so much. So we have then qualitative and quantitative legal research. Again, both of them are opposite to each other. So as you can see in qualitative research, we have that we explore the quality and characteristics of legal phenomena, employing methods like unstructured interviews and participant surveys to gain insight into subjective experiences and perception. तो क्वालिटेटिव लीगल रिसर्च में क्या होता है कि हम एक ज्यादा थॉरो मैनर में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस. बाय व्हाट मैनर? बाय यूजिंग interviews, by talking to them. So say for example we want to understand experiences and coping mechanisms of people who have been victim to domestic violence. तो हम उनका एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेंगे, हम उनसे बात करेंगे टू अंडरस्टैंड how the survivors of domestic violence have what they have experienced, what were their coping mechanisms, and if there is any common factor between how they're trying to deal with the problem. That is what we'll try to understand in qualitative legal research. We do not go on the numbers, but we try to gain more insight on their behaviors. We do not want hundreds and thousands of people to give their interviews or sign up to questionnaires and give answers. But we want just interviews to understand better the human behavior. Then we have the quantitative. Quantity का मतलब ही होता है we are going to measure something and it relies highly on the number and data. So in quantitative legal research, we use quantifiable variables and statistical methods. जैसे कि हम questionnaires use कर सकते हैं, जैसे कि we can do surveys, we can do group discussions and such various things and collect a data to test our hypothesis or to test our question. Now, this is mostly used in fields like medicine, psychology, and social sciences, and now it is also being used in law for certain particular aspects. Say, for example, हम बात करते हैं of the recent changes in the criminal laws. So, we have three criminal laws, we have changes, and अगर हम quantitative legal research कर रहे हैं on the top on, and I take my hypothesis as that the people of this particular community, XYZ community, are not very happy with the changes and why. So I take this kind of question in mind. तो मैं उस community के लोगों के पास जाके I'll give them questionnaires, I'll give them and I'll do surveys, I'll take their interviews, and I'll gather as much data as possible to measure and understand the quantifiable aspect कि क्या मेरा hypothesis सच भी है या नहीं. Then we have conceptual and empirical legal research. Again, both the concept opposite of each other. So, conceptual legal research engages with abstract theories or ideas commonly used by philosophers to reinterpret or develop existing legal concepts, contributing to theoretical frameworks.
सो कॉन्सेप्चुअल लीगल रिसर्च क्या होती है कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट थियोरी है अपने माइंड में कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो what we do is we try to develop that particular concept in a much more better manner. So, for example, developing new theories to understand what law is, or developing new theories to understand the human behavior better. That is what conceptual legal research is. Then we have empirical legal research. So, empirical research is based on observation and experimentation, collecting data to test hypotheses, and draw real world solutions and conclusions to provide evidences. So, empirical research में क्या होता है? We again collect a lot of data, we do observation, we do experimentation, and we utilize that data in fact to substantiate, yeah, to prove and disprove our hypothesis with particular evidences. So these are the 8 kinds of legal research which are there. Apart from that, there are other 2 which we'll discuss more deeply. Now, अब हम legal research की बात करते हैं. Now, legal research is taking clue from the meaning of research. जब हमने research की बात करी थी, तो research क्या होता है? Research basically is creation of new knowledge or using existing knowledge to create newer information or to understand newer concepts. So, legal research may be defined as systematic investigation towards increasing the sum of knowledge of law. बेसिकली लीगल रिसर्च का मतलब होता है कि हमारे पास एक्सिस्टिंग नॉलेज है एंड हम उसको और ज्यादा पढ़ रहे हैं, उस पर और ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, और ज्यादा उस पर हम लोग कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द लॉ इन अ मच बेटर मैनर एंड टू अंडरस्टैंड हाउ लॉ वर्क्स इन अ मच बेटर मैनर. Legal research, thus, is the process of identifying and retrieving information that is necessary to support legal decision making. It includes in each step of a course of action that begins with analysis of a fact of a problem and concludes with the application and communication of the result of investigation. Now, जब हम रिसर्च की बात कर रहे थे, तो हमने 8 तरह की रिसर्च की बात करी थी. Now, when we talk specifically of legal research, we have doctrinal research, research and theory, empirical investigation and reform oriented research. तो ये सारे जो research है, these are specifically used in legal fields. तो doctrinal legal research जो होती है, it is also known as a library based armchair research, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना होता. Because what you do is you have a particular set of rules, you have a particular set of theories. आप बस उस पे और ज्यादा knowledge लेते हो by using the things that are available to you on internet, या फिर जो आपकी commentaries है, या फिर जो आपके text books है जो various authors ने लिखे. You use them to try to understand a particular concept in a much better manner, and that is doctrinal research. Then we have research and theory. Research and theory focuses on the conceptual foundation of legal rules and doctrines. It serves as a basis for empirical research and helps in development of law through legislative, judicial and administrative means. So basically जो research and theory होती है उसमें हम conceptual foundation of legal rules, मान लो कोई legal theory है, उसे ज़्यादा develop करने पे part देते हैं. But what this conceptual foundation of legal rules does is it forms a basic for empirical research जो हम फिर real life problems में use करते हैं. So that is why after research and theory I have written empirical investigation. एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि हम लॉ के प्रैक्टिकल इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं बाय एक्सप्लोरिंग इट्स सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल इफेक्ट्स. तो मान लीजिए जो नए 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं, वी वांट टू एक्सप्लोर the practical impact of these new 3 criminal laws because they have in some way or other changed the course of what was going on since 1860, right? तो हम क्या जानते हैं, हम इस पे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल इफेक्ट्स जो भी आ रहे हैं इन आवर रियल वर्ल्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लॉज, हम उसे हाईलाइट करते हैं. सो व्हाट एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस डज इज, जो थियरी होती है और जो हमारा प्रैक्टिकल रियल लाइफ आउटकम होता है उसके बीच का जो एक गैप होता है उसको ये ब्रिज कर देती है. बिकॉज वी यूज थियरी. थियरी क्या है, हमारे पास 3 न्यू क्रिमिनल लॉज है, हम उनको पढ़ेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे. बट एम्पिरिकल रिसर्च जो होती है उस एग्जामिनेशन के बाद हम ये भी जानेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या आया है ऑन वेरियस सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स, इकोनॉमिक ग्रुप्स एंड वेरियस कल्चरल ग्रुप्स.
तो ये जो गैप होता है एक थियरी और एक रियलिटी के बीच का, दैट इज ब्रिज्ड by empirical investigation, and that is why empirical investigation is also very important when it comes to legislature. क्योंकि अगर legislature empirical investigation नहीं करेगा of the laws that is there, then the country and the people of it will never be satisfied, and they'll never think that laws are there to help them. उनको हमेशा लगेगा laws are there to ground them rather than to empower them. So that is why trying to understand people's perspective is very important, and empirical legal research is hence highly used, I'll say, by the legislative departments. Then we have reform oriented research. So reform का मतलब ही होता है कि हम जो research करते हैं, we are doing it to change laws or to bring out some changes. So reform oriented research uses empirical data and critically analyzes कि law का purpose क्या था. मान लो कि ये 3 नए criminal laws आए. We try to understand what was the purpose of these laws, and then we use the empirical data कि इस laws का social, political, economical and cultural effect क्या हुआ है. Now हमारे पास laws है, हमारे पास purpose है कि ये क्यों implement हुआ है. Then we have कि इनके implementation से लोगों पे क्या impact हो रहा है. Now that we have that, we try to understand कि जो problem इन 3 laws को solve करनी थी, were they solved or not. So once the 3 laws have been implemented, we try to understand that through empirical data that we collected, if the problem that the law seek to solve was solved or not. अगर problem solve हुई है, it's well and good. But if there is a scope of amendment, if there is a scope of change, या फिर law is doing more harm than good, then we try to collect such evidence and bring it before the legislative department to suggest reforms in the current practices. So that is what reform oriented research is. Uh, guys, just give me a moment. I'm so sorry. Yeah. So I was at this slide, steps to writing. So let's continue. So steps to writing, there are 4 specific steps that we are addressing. The first is Ma'am, what? slides are not visible. Your screens. Oh, okay, give me a moment. Ma'am, kindly reshare whole. Yeah. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. And is the slide visible? Yes, ma'am. Okay. Kindly move the slide, ma'am. Yeah. No, ma'am, it's not moving. I Slides are have. not changing, ma'am. Which slide is visible now? Can you please tell me? Steps to writing. Uh, okay. I think I have a network issue. Guys, please let me reconnect. So there are 2 pages of steps to writing. Rishabh, can you please tell me what is the first point that you see? Making a rough and filing information. Okay. Now, No, ma'am, it's not changing. Ma'am, do one thing. You send me the PPT. I'll share my with my laptop. yeah. Okay, great. Just give me a moment. I'm so sorry for the inconvenience.
Just wait for a while. Rishabh, I've shared the PPT with you. Please check. No, ma'am, it's not received. Yeah, I'm so sorry, guys, for the inconvenience. So while Rishabh shares, I'll begin. So we were talking of steps to writing. So जब हम बात करते हैं legal writing की, there are a few steps that one usually goes through. The first is you try to understand what your research question is. The second is you try to identify your headings and subheadings and what are the things that you want to inform about. The third is you make a rough draft, and the fourth is revision and addition. So, first step is what is your research question? So, even before you start writing, or even before you think of continuing to a topic, you need to understand the question at hand. So, is there a specific topic that you will be writing about? Are there any particular aspects or dimensions that you want to explore, or is it the whole topic in general? And how will your particular research question contribute to existing knowledge or ideas and address the gaps? That is what your research question is. So मान लो I take the concept of rape laws under the newly implemented criminal laws. Okay, so will I be talking about the whole thing? Will I be talking only of the amendments? Will I be talking about the changes brought about into? Will I be dealing with the negative aspects only, or will I be dealing with the positive aspects only? What will I be dealing with? You just don't have to understand the topic, you'll also have to address कि आप कौन से specific dimensions को deal करोगे in your particular research article that you're writing. That is what you do. The second is identifying your headings and subheadings. Now, once you have you have understood your topic, you have understood your research question, then comes the point of identifying your headings and subheadings. So, what are the main categories and themes that you'll discuss? Now, अब obviously जब आप research paper लिखते हो, yes, Rishabh, your screen is visible. So, जब आप अपना research paper लिखते हो, obviously you write an introduction, you write a background, you then come to the main body, right? So, उस main body में जो आप topics deal कर रहे हो, are they going to be just that, or can they be broken down into more smaller and more specific subtopics? That is the question that you need to understand and you need to address. Then, how will you organize your research into headings and subheadings, and how it will structure your particular research question? तो जब भी आप अपने टॉपिक मतलब उस पर थोड़ा रिसर्च करोगे, अब आपने अपने आपके पास आपका रिसर्च टॉपिक आ गया, यू हैव ऑल्सो फिगर्ड आउट
कि आपको स्पेसिफिक डायमेंशन से डील करना है एक पर्टिकुलर टॉपिक के या नहीं, या फिर आपको ब्रॉड में डील करना है, देन यू हैव वेरियस आइडियाज इन माइंड कि आपको क्या क्या चीजें डील करनी है. Now, say for example, I talk of rape laws and I want to be talking about the whole thing. So I want to be talking about each and every aspect, including the amendment, the old act, the new act, the positive aspect, the negative aspect. पुराने law में क्या होता था, नए law में क्या होता था. So these are some points that I want to be dealing with, and then I want to be dealing with certain specific case laws. So that is what I'll be writing and I'll be adding. So अंडरस्टैंड योर रिसर्च क्वेश्चन, एंड जैसे जैसे आप रिसर्च करोगे, जैसे जैसे आप उस टॉपिक पे और डिग करोगे, यू विल हैव वेरियस हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. राइट डाउन दोज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, क्योंकि ओनली वंस यू हैव दोज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स यू विल बी एबल टू फिल इन योर ड्राफ्ट, which is again the third point. Rishabh, can you please move to the next slide? Thank you. So the next slide, the first point is making a rough and filling in information. Now you have your headings and subheadings. Say I want to talk about the old rape laws under the IPC 1860. So I'll first write about the IPC 1860. I'll make a rough draft कि उस time rape law क्या था and how the concept of rape was treated. Then I'll have certain case laws जिसको मैं deal करूंगी. Then I want to write about the newly amended act, new act, that is the BNS. So BNS में rape कैसे deal किया जाता है, then I'll write that. Then I'll write about if there are any or commentaries that have come already relating to BNS and rape under that particular act. उसमें क्या होता है, then I'll write that. So only after I have my headings and subheadings organized, मैं एक rough में information डाल सकती हूँ. So identify your headings and subheadings and then make a rough and fill in your information. So उसको आपको एक organized तरीके में भी रखना है. So how will you organize and record this information to ensure that it aligns with your headings and subheadings is a question that you need to figure it out. Then what strategies you'll use to fill in gaps in your research. Now when you're doing your research, it will not be 100% perfect. कुछ ना कुछ gaps होंगे. तो उन gaps को identify करना is one of the hardest aspects also of research, because until and unless you identify the gaps, आप कभी अपना research paper पूरा नहीं कर पाओगे. So identify the gaps and understand what all points or what all pointers are missing in my research paper, and then fill in that information as well. And fourthly and most importantly, obviously, revise and edit. How will you review your article? क्या आप अपने friends को दोगे, क्या आप अपने teachers को दोगे, क्या आप किसी ऐसे इंसान को दोगे जो रिव्यू का काम करता है, स्पेसिफिक एडिटर्स होते हैं उनको दोगे. तो किसको दोगे आप अपना ड्राफ्ट एडिटिंग के लिए, किसको दोगे आप अपना ड्राफ्ट रिव्यू के लिए. दैट इज वन क्वेश्चन यू नीड टू एड्रेस, बिकॉज इफ यू एवर गो एंड सबमिट योर आर्टिकल विदाउट रिवाइजिंग इट, विदाउट एडिटिंग इट, देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका आर्टिकल में काफी सारे गैप्स हो, काफी सारे इश्यूज हो, जो probably you might have missed while writing, but the other person who's reading it might address it, and they'll help you make your research paper much better. So that is the fourth point, that is revising and editing. So you'll have to do that as well. Rishabh, can you go to the next slide, please? Yes. So these stages are what you deal with while you're writing your specific research paper. तो जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो या जब आप थीसिस और डिसर्टेशन लिखते हो, द फर्स्ट थिंग यू ट्राई टू आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. तो until and unless आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम हो, आप कुछ रिसर्च करोगे नहीं. So first point that you do while you're writing your research paper is you identify your research problem and make a proper question out of it. The second point is you write the review of literature. रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है कि मान लीजिए आपसे पहले बहुत स्कॉलर्स होंगे, बहुत स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत सारे ऑथर्स होंगे जिन्होंने या तो सेम टॉपिक पे या फिर सिमिलर टॉपिक्स पे बुक्स लिखी होंगी, रिसर्च पेपर्स लिखी होंगी या थियोरीज बनाई होंगी. तो आप उनका पेपर पढ़ते हो, आप उनके बुक्स या फिर उनके लिखे हुए रिसर्च को पढ़ते हो, एंड यू समराइज इट एंड राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स कि इस रिसर्चर ने इस पर्टिकुलर
XYZ आर्टिकल में ये बात कही है, बट देर आर सर्टन गैप्स दैट ही डिडंट एड्रेस, जो मैं अपने रिसर्च पेपर में एड्रेस करूंगा या करूंगी. दैट इज व्हाट रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज. यू फाइंड आउट सिमिलर और सेम research papers and research articles relating to your particular topic, and you try to understand what they have written, what they have tried to communicate, and how your research paper is different from theirs. And if there are any gaps in their paper जो आप address करोगे, you mention that as well. Third is the formulation of hypothesis. That is कि आप कौन कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स को डील करोगे अपने पर्टिकुलर टॉपिक में, कौन कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप आंसर करोगे अपने पर्टिकुलर रिसर्च पेपर में. दैट इज व्हाट हाइपोथेसिस इज. बिना हाइपोथेसिस के आप कभी अपना डिसर्टेशन या थीसिस लिखोगे नहीं. सबमिटिंग अ हाइपोथेसिस और अ रिसर्च क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट while you write your पर्टिकुलर डिसर्टेशन या थीसिस जो भी आप लिख रहे हो. हाइपोथेसिस बेसिकली इज अ क्वेश्चन. तो आपने एक ब्रॉड टॉपिक ले लिया है, उस टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चन है जो आप एड्रेस करोगे, जिनको आप आंसर करोगे थ्रू योर रिसर्च पेपर. तो वो कौन से क्वेश्चन है, दोज आर द क्वेश्चन दैट यू नीड टू फॉर्मुलेट एंड राइट इन योर हाइपोथेसिस. The third is you come up with a research design. अब आपके पास एक टॉपिक है, आपके पास लिटरेचर है सिमिलर, आपके पास क्वेश्चंस है. उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए whether you use doctrinal research, whether you use empirical research, whether you use qualitative research, non-doctrinal research, कौन से research methodology use करोगे. Before this we have talked of 8 methodologies, and now in the next slides we'll talk of 2 more research methodologies. तो आप उनमें से कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करोगे टू कलेक्ट योर डेटा, एंड आप किस हिसाब से अपना रिसर्च को ब्रेक डाउन करोगे, कितने चैप्टर्स में क्या एक्सप्लेन करोगे. दैट इज व्हाट योर रिसर्च डिजाइन इज. देन कम्स द कलेक्शन ऑफ डेटा. नाउ when you're doing your research, obviously you need data. It can be in matter, it can be through cases, it can be through numbers, it can be through the interviews you take, it can be through RTIs you give to government authorities to collect your to collect information. कुछ भी हो सकता है, right? तो आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे और उस कलेक्शन का आप एनालिसिस करोगे. दोज आर द नेक्स्ट 2 steps. Whether you will use graphical method, whether you use tabular representation, whether you will use pie diagrams or charts, or whether you'll just mention the research, or you'll just mention the data. क्या करोगे आप, कैसे उसको एनालाइज करोगे. That is the next step. And after that comes the interpretation. Now when you're writing a research paper, आप बस डेटा कलेक्ट करके छोड़ नहीं दोगे, राइट. मान लो मैंने अपनी डिसर्टेशन करी है रिलेटिंग टू बेल प्रोविजंस इन इंडिया, जिसमें मैंने लिखा है कि 10 साल से ज्यादा हो गया बहुत लोगों को जिनका अभी तक ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हुआ है. दे आर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, राइट. से फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन द टॉपिक ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स. I've made RTI to various government authorities, various courts, and collected data on the number of under trial prisoners in India. उसके बाद मैंने एक चार्ट बना दिया एंड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी कि इतने से इतने साल तक के अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं इंडिया में. अब सिर्फ डेटा लिख के क्या होगा. What do I want to explain through that data? How I want to interpret the data? Whether I want to interpret in positive light, negative light? What is my particular understanding of that data. मेरे हिसाब से कि judiciary is somewhat lacking because under trial prisoners इतने सालों से जेलों में पड़े हुए हैं and they're not even they've not been proved guilty, and उन्होंने अपने मान लीजिए 10 साल की सजा, 10 में से 5 साल उन्होंने अंडर ट्रायल ही काट ली है. This is where our justice system is lacking and I want to explain that. तो मैं अपने डेटा को जब एनालाइज करूंगी, जब उनका ग्राफ बनाऊंगी, तो उनको इस तरह से इंटरप्रेट करूंगी, and then I'll give my research report. In my research final report, I'll mention everything. First, I'll mention कि मेरे research question क्या थी, what are the review of literature that I've done, कि मेरे से कि what were the similar topics, what were the similar research papers that were related to me, what I have read in them and what I have understood कि वो author उस author ने क्या बोला है. That will come in my review of literature. Then we have formulation of hypothesis कि मैं किन 3 क्वेश्चन से, किन 4 क्वेश्चन से, किन 2 क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगी. मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिए है कि is our justice system
taking the court of justice as well to decide if it is true or not, then mention the trial prisoner name, या फिर ऐसे ही कुछ मैंने दो तीन क्वेश्चन ले लिए तो उनको मैं मेंशन करूंगी देन आई राइट कि रिसर्च डिजाइन क्या है मेरा दैट इज हाउ आई हैव डन माय रिसर्च से फॉर एग्जांपल आई हैव यूज्ड quantitative I've used qualitative data, I've used non-doctrinal legal resource method, and I've also used doctrinal. So I'll mention all those three of them, and how I have collected my data is the next thing I'll mention. Then I'll analyze the data, interpret the data, and then come up with a conclusion, and that is how my whole research report will be. Rishabh, can you please move to the next slide? Thank you. So the next slides talk about doctrinal and non-doctrinal legal research methods, which are two of the most widely used legal research methods by the people in field of law. So doctrinal legal research basically हम सब use करते हैं from our schools till we become lawyers and even after that. So doctrinal legal research basically focuses on the legal principles, doctrines, and case laws. What we do is we study the statutes, we study the regulations and judicial decisions, and try to interpret a particular legal doctrine या फिर कोई भी rule या फिर कोई law हम उसे interpret करने की कोशिश करते हैं with already existing data. नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च क्या होती है इसमें हम एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ को डील करते हैं इन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च वी आर ओनली फोकस्ड ऑन लॉ क्या है but in non-doctrinal legal research we focus on what law is, how it is related with other fields of study such as psychology, sociology, anthropology, even economics for that matter of fact. तो हम लॉ को पढ़ते हैं इन एस्पेक्ट ऑफ अदर फील्ड्स एज वेल बिकॉज वी नो लॉ इज समथिंग दैट डजंट जस्ट इम्पैक्ट द लॉ कम्युनिटी बट वो लोगों को इम्पैक्ट करती है वो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्पैक्ट करती है कंट्री के वो उसके अलावा सोसाइटी को एज अ होल भी इम्पैक्ट हाउ इज लॉ इम्पैक्टिंग द सोसाइटी that is what we try to understand in non-doctrinal legal research. Then comes the aims of doctrinal legal research. So the aim of doctrinal legal research is to clarify, explain, and develop legal principles and doctrines. It aims to it aims at expanding our theoretical understanding and interpretation of legal text. Whereas in non-doctrinal legal research, we try to understand how law functions, what are its practical applications, and how it impacts the society. So जब हम डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च की बात करते हैं वी यूज लीगल टेक्स्ट सच एज स्टैट्यूट्स केस लॉज लीगल कमेंट्रीज लीगल रिसर्च पेपर्स हो गए जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हो गए हम ये सारी चीजें यूज करते हैं बट व्हेन वी टॉक ऑफ नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च वी यूज एम्पिरिकल मेथड्स such as surveys, interviews, case studies, and statistical tools and observation techniques and field work. तो डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च जो होती है वो आप आराम से लाइब्रेरी में बैठ के घर पे बैठ के थ्रू वेरियस सोर्सेस सच एज इंटरनेट टेक्स्ट बुक्स ये सब कर सकते हो बट वेर एज नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च उसमें आप फील्ड वर्क करते हो आप सर्विस करते हो आप क्वेश्चन देते हो उनको फिल आउट करवाते हो एंड आप केस स्टडीज करते हो दैट इज व्हाट नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च इज सो कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च इसमें काफी ज्यादा फील्ड वर्क इन्वॉल्व होता है Rishabh, can you please move to the next slide? Thank you. So coming to the advantages and limitations of doctrinal legal research. So the first advantage is the very obvious one, that is it provides quick answers to legal problems and utilizes already established periodicals and indexes. इसमें हम कोई random बच्चों का लिखा हुआ रिसर्च पेपर को एग्जामिन ना करके but we use the ones that have been published in well established periodicals या फिर जिनको आप बोलते हो well established रिसर्च जर्नल्स हम उनको यूज करते हैं वी यूज लीगल टेक्स्ट लीगल स्टैट्यूट्स लीगल केस लॉज जिसपे आप ए का बी भी नहीं कर सकते सो वी यूज सम एस्टैब्लिश्ड we use some established information and come up with quick solutions. Then the second advantage is that it tests the logical consistency and soundness of legal propositions, contributing to the development of well-structured legal doctrines. So, I'm so sorry, guys. Give me a moment.
So the second point is that जब हम डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च करते हैं वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो लॉ है, जो स्टैट्यूट को हम एग्जामिन कर रहे हैं या फिर जो लीगल थियोरी को हम एग्जामिन कर रहे हैं, वेदर इट इज इवन रेलेवेंट आज के टाइम पे, हम उसकी लीगल लॉजिकल कंसिस्टेंसी और लीगल साउंडनेस को, कि कहीं ये ऐसी तो चीज नहीं है दैट इज अगेंस्ट, से फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल राइट्स, या फिर दिस इज समथिंग दैट इज अगेंस्ट द मोरल वैल्यूज, हमें ये पता चल जाता है तो डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च. And the third advantage is that this type of research offers a detailed logical exposition and analysis of laws and doctrines. Now, coming to the limitation, the first and most obvious limitation is that हम बस theory में अटके रह जाते हैं when we study doctrinal legal research. हम real world implications पे जाते ही नहीं है and हम practical outcomes को देख ही नहीं सकते when we are doing doctrinal legal research. The second point is that it is very subjective and it reflects the researcher's perspective. Because आप जब एक डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च करते हो तो आपका पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है, मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई देयर आर वेरिंग आउटकम्स. क्योंकि हम किसी नंबर पे रिलाई नहीं कर रहे, हम किसी इंटरव्यू पे या हम किसी डेटाबेस पे रिलाई नहीं कर रहे, वी आर जस्ट trying to give our particular understanding of a topic. So that is what doctrinal legal research ka limitation is. And the third limitation is that it may overlook the extra legal factors such as social prejudices and economical influences. And doctrinal legal research is uh, often disconnected from the practical social context and contemporary issues, because we are just focused on law क्या है, हम उसकी causation पे नहीं जाते. We don't try to understand कि इसमें कुछ गलत है भी या नहीं, या फिर लॉ इज सर्विंग इट्स पर्पस और नॉट. वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन व्हाट लॉ इज एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट. Rishabh, can we please go to the next slide? Now, talking of some other advantages, the first is that doctrinal legal research जो है, it highlights the loopholes, gaps and ambiguities in laws. Then it facilitates the development of new propositions. And the last advantage is that it allows for prediction about future direction and content of legal principles and doctrines. Because जब आप doctrinal legal research करते हो तो आपके पास एक precedent होता है कि इस law पे इसी तरह के decisions आ रहे हैं, या जजेस बेसिकली इसी तरह के डिसीजन देते हैं एक पर्टिकुलर इशू पे. सो यू कैन प्रिडिक्ट कि फ्यूचर में भी अगर ऐसा कोई इशू आएगा तो ऐसे ही डिसीजंस होंगे. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च. Back to limitation, doctrinal legal research may not address the impact of social factors and it lacks empirical validation. क्योंकि हम तो रिलाई कर नहीं रहे किसी नंबर पे, ना हम इंटरव्यूज कर रहे हैं, ना हम सर्वेस कर रहे हैं, ना हम जीडीज कर रहे हैं, ना हम क्वेश्चनियर्स ले रहे हैं. सो एम्पिरिकल वैलिडेशन नहीं रहती है आपके पर्टिकुलर रिसर्च वर्क में. एंड जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो कई बार चेंज, मतलब जो प्रेडिक्शंस होते हैं दे मे नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट प्रैक्टिकल चेंजेस ऑफ सोसाइटल रियलिटीज, बिकॉज लॉ इज समथिंग डायनामिक. अगर जज ने पिछले 10 सालों से एक ही तरह का डिसीजन दिए इन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन दैट पर्टिकुलर लॉ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि वो आज 11वें साल में भी वैसे ही डिसीजन दे, बिकॉज सोसाइटी चेंज, सोसाइटी इज डायनामिक एंड हेंस द लॉ इज आल्सो वेरी डायनामिक. सो जो प्रिडिक्शंस होते हैं they do not reflect the practical and social realities. Rishabh, please, the next slide. Thank you. So, coming to non-doctrinal legal research. So, non-doctrinal legal research की सबसे पहले advantage ये है that this highlights the gaps between legislative goals and societal realities. So, whenever a law is being enforced, it comes with a purpose. So लॉ का जो पर्पस था हम उसे हाईलाइट करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च कि क्या वो पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं. इफ देयर आर एनी गैप्स, व्हाई आर देयर गैप्स, वी ट्राई टू डिपिक्ट देम in our non-doctrinal legal research. The second advantage is that it assesses the roles and impact of law in achieving socio-economic justice, providing the insights into how law has affected the society.
इसका लिमिटेशन ये है कि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली एंड नॉट एवरीवन कैन डू इट. इट रिक्वायर्स a specific set of, I'd say, टेक्निक, एक स्पेसिफिक तरह की आपको आनी चाहिए लोगों से बात करने की, बिकॉज नॉट एवरीवन विल बी ओपन टू आंसरिंग योर क्वेश्चंस, नॉट एवरीवन विल बी ओपन टू बीइंग ओपन विथ यू. तो आपको आना चाहिए लोगों से बात करना, आपके पास वो टेक्निक्स होनी चाहिए टू ट्राई टू कम्युनिकेट विद पीपल इन अ बेटर मैनर, टू अंडरस्टैंड and to get answers from them. So, firstly, it is very time consuming. Second, it is very costly. And thirdly, हर कोई ये नहीं कर सकता. The second limitation is that you need to have a strong foundation on your doctrinal concept to understand उसका impact. तो मान लो हम बात कर रहे हैं से फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज के बारे में. आपको पहले डोमेस्टिक वायलेंस का थ्रू एंड थ्रू नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उस पर नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च कर दो, क्योंकि अगर आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एंड until and unless your knowledge is clear and your concepts are clear, you will not be able to achieve your purpose through non doctrinal legal research. Rishabh, next line please. Then coming to the next advantage, it is that the research provides valuable feedback and expert advice to policymakers, legislators, judges, and it helps them improve their foundation, enforcement, and interpretation of laws. क्योंकि जब आप नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च करते हो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो गैप्स है लॉ में वो ब्रिज कर पा, लॉ अपना पर्पस अचीव कर पा रहा है या नहीं. सो वंस योर रिसर्च इज डन, वंस यू हैव कम अप विद डेटा, वंस यू हैव प्रोवाइडेड योर होल पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट, it helps the legislators understand कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, whether it is in the formation of law, whether it is in the enforcement, या whether it is in the interpretation of law. तो वो चीजें एड्रेस करती है आपकी नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च मेथड, एंड इट हेल्प्स द पॉलिसी मेकर्स, द लेजिस्लेचर्स एंड द जजेस एज वेल. And the last advantage is that it helps in shaping social legislation to align with social engineering philosophy of modern states, making law more effective for socio-economic transmission. Now coming to the last two limitations. पहला ये है कि basic data collection tools like interview question and questionnaires are complex and require specialized knowledge and skills, making the research challenging. जैसा मैंने बोला कि without proper training कोई भी legal scholar, कोई भी legal student, कोई भी researcher नहीं कर पाएगा interview सही से. So that is one of the. Now when we are talking of legal research, so give me a moment. I'm so sorry, guys. I'm not very well today. So sorry for the disruptions. तो जब हम बात करते हैं नॉन डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च की, तो हम काफी सारे इंटरव्यूज करते हैं, काफी सारे हम लोग रिसर्च करते हैं, और हम कई सारे लोगों से बात करते हैं. बट लोगों से बात करते करते हमारा खुद का भी एक पर्सपेक्टिव बन सकता है. तो अगर हमारा खुद का एक पर्सपेक्टिव बन गया, वेदर वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिमेन न्यूट्रल, बट काम बट रिसर्च करते करते वी एंड अप मेकिंग अ माइंड कि हम इधर पॉजिटिव सोचने लगते हैं या नेगेटिव सोचने लगते हैं, एंड दैट impacts our objectivity in our findings. So that is one of the limitations of non-doctrinal legal research. Rishabh, can we go to the next slide, please? So, अब आपके पास जो स्लाइड है, that says the points to remember that you need to understand while writing a research article. So the main 4 points are the length of the article, the language and grammar, the scannability, and explaining jargons. So when we talk of length of the article, तो जब आप dissertation लिखने या thesis लिखने जाते हो, अपना research paper publish कराने जाते हो, there are always a set of guidelines. So the first and most important thing is
द वर्ड लिमिट. आप जो आर्टिकल या रिसर्च पेपर या डिसर्टेशन या थीसिस लिख रहे हो, इट मस्ट बी अंडर द वर्ड लिमिट ना. से फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू पब्लिश अ रिसर्च आर्टिकल इन एक्सवाइजेड जर्नल, तो हर जर्नल के अपने गाइडलाइंस होते हैं कि तीन, से फॉर एग्जाम्पल एक्स जर्नल है, उसका गाइडलाइन है कि योर रिसर्च आर्टिकल मस्ट बी बिटवीन 3000 to 6000 वर्ड्स. So if you write anywhere less than 3000, मान लो आपने सिर्फ 1500 लिखा and you expect them to publish, that's not happening. और अगर आपने मान लो 10,000 words लिखे, that again they'll not publish because they are exceeding the word limit. So always try to constrain your article कि word limit के बीच में 3000 से 6000 words के बीच में कहीं भी आर्टिकल is it is fine and it is publishable. And बस आपके आर्टिकल के वर्ड लिमिट पे वो कभी रिजेक्ट नहीं होगा. सो ऑलवेज बिफोर इवन यू स्टार्ट राइटिंग योर आर्टिकल, वर्ड लिमिट देखो, उसको ध्यान में रखो, एंड देन मेक योर हेडिंग सब हेडिंग्स. देन इज द लैंग्वेज एंड ग्रामर. So, as law students and as lawyers and even other people related to XYZ fields, सबको ये लगता है कि अगर फैंसी इंग्लिश में लिख देंगे, अगर काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज कर देंगे, तो आपका आर्टिकल तो डेफिनेटली पब्लिश होना ही है. That's not the point. The reason you're writing research paper is so that people understand a particular concept. So your language must be simple, and the only thing that your research paper needs to address when it comes to English and language is that it must be grammatically correct. मान लो आप कभी कहीं पे फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में लिख रहे हो और बीच में जाते जाते आप कहीं पे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में लिख रहे हो, किसी को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चले गए हो आप, तो उससे आपका ग्रामर पहले तो बहुत खराब लगता है आपका. ऐसा लगता है कि आपने अपना रिसर्च पेपर बेसिकली कॉपी पेस्ट किया है, इवन इफ यू हैव नॉट कॉपी पेस्टेड, बट इफ द ग्रामर इज इनकरेक्ट. से फॉर एग्जांपल, in one place it is an active voice, in the other there's passive voice, and there's no standardized format in which you have written your particular article. तो चाहे आपने कितनी मेहनत करी हो, चाहे आपने खुद से ही लिखा हो, बट द द पर्सन हु इज रीडिंग इट, द रिव्यूअर, द एडिटर, उसके दिमाग में पहला पॉइंट यही आएगा कि इस बंदे ने कॉपी पेस्ट किया है, बिकॉज एक पर्सन लिखते लिखते इतने बार ग्रामर कैसे बदल सकता है अपना. Within the word limit, remember to keep your language simple and crisp, and it must be grammatically correct. The third point is scannability. तो स्कैनेबिलिटी बेसिकली मीन्स कि अगर मैं आपका आर्टिकल या रिसर्च पेपर फर्स्ट मतलब ऐसी स्किम कर रही हूँ, तो क्या मुझे उसमें हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स सही से डिफाइन मिल रहे हैं या नहीं. इफ द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आर क्लियरली डिफाइंड, इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल मुझसे रेलेवेंट है भी या नहीं. सो दैट इज व्हाट स्कैनेबिलिटी मीन्स. यू नीड टू write your headings and subheadings in such a manner that the person who is reading your article is able to understand whether or not this is even beneficial for them. And the fourth point is explaining legal jargons. Yes, as law students, we'll definitely use Latin accents, we'll definitely use various complicated terms. But अगर हम कोई ऐसा term use कर रहे हैं which is not known to the general public, which is not known to a first year law student या फिर a law enthusiast for that matter of fact, it is important that we explain that term. क्योंकि हम हमारा रिसर्च पेपर का पर्पस यही है कि हम लोगों को किसी चीज के बारे में एजुकेट करें. अगर वो समझ ही नहीं पाएंगे, कहाँ से एजुकेट होगे. they'll be like, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा पेपर है, बट मुझे तो ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसने इतने फैंसी वर्ड्स यूज किए, मुझे हर 2 मिनट में डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है या फिर थिसॉरस खोलना पड़ रहा है टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से. तो अगर ऐसा है आपके रिसर्च पेपर में, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. फर्स्टली बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट चला जाएगा पढ़ने में, क्योंकि उनको हर 2 मिनट में थिसॉरस या डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है या गूगल करना पड़ रहा है. एंड सेकेंडली बिकॉज उन्हें समझ नहीं आएगा. So that is why explain the jargons that you use always. चाहे ब्रैकेट्स में एक्सप्लेन करो, चाहे दैट इज लिख के एक्सप्लेन करो, बट एक्सप्लेन इट. ऋषभ, can we come to the next slide, please? The 16th slide. Yes, thank you. So, coming to a format of normal article, and this one relates to the articles that you'll be writing in Legal Vidya. The first is abstracted keywords, the second is introduction, the third is main body, and the fourth is conclusion. So, firstly,
Uh, no, I'm all right, thank you. Firstly, let's talk of abstracted keywords. So, abstract basically is a concise summary of your articles, जिसमें आप basically outline करते हो अपने article के main points and findings and the conclusion of your research. It is usually written in 100 to 250 words, so a short paragraph that you write before even beginning your research paper is an abstract, जहाँ पे आप अपने पूरे आर्टिकल की एक concise summary लिखते हो. Just below your abstract, you write your keywords. कीवर्ड्स बेसिकली वो होते हैं, वो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं या फिर वो स्पेसिफिक फ्रेजेस होते हैं जो आपके मेन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं. मान लीजिए माय टॉपिक रिलेट्स टू द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज. तो 3 कीवर्ड्स तो मेरे यही हो गया: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम. तो 3 कीवर्ड्स मेरे ये हो गए. अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन राइट 3 न्यू क्रिमिनल लॉज. उसके अलावा आई कैन राइट सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट. तो ये कुछ 5-7 वर्ड्स जो आपके मेन टॉपिक को एनकैप्सुलेट करते हैं, मेन थीम को समझने में हेल्प करते हैं. दोस आर कीवर्ड्स एंड दीज वर्ड्स गो जस्ट बिलो योर एब्स्ट्रैक्ट. देन कम्स योर इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां से आपका मेन आर्टिकल चालू होता है. तो इंट्रोडक्शन में पहले तो 2 चीजें आती है: इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड. इंट्रोडक्शन जब आप लिखते हो तो आप बेसिकली आपका जो टॉपिक है, मान लीजिए मेरा टॉपिक है द 3 डी क्रिमिनल लॉस, तो मैं बस इंट्रोडक्शन में ये इंट्रोड्यूस करती हूँ कि इस दिन को प्रेसिडेंट ने ऐसे दी थी इतने क्रिमिनल लॉज की, एंड दीज लॉज विल रिप्लेस द ओल्ड क्रिमिनल लॉज दैट वर एप्लीकेबल इन इंडिया, दैट इज द आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट. फिर मैं बैकग्राउंड प्रोवाइड करूंगी. तो बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड इज लाइक अ सब सेक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट. आप उसमें एक सब सेक्शन बना के लिख भी सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि बैकग्राउंड, और यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद द इंट्रोडक्शन. सो दिस सब सेक्शन प्रोवाइड्स रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फॉर द रीडर्स, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से डील करते हैं, हम लेजिस्लेटिव हिस्ट्री से डील करते हैं, और रेलेवेंट लीगल प्रिंसिपल्स अगर एप्लीकेबल है तो उनसे डील करते हैं. So first, the introduction, we try to introduce our reader with the topic, and then in the background we try to provide the history of the particular topic, ताकि हम एक base build कर सके for our main article. Rishabh, can we please move to the next slide? Rishabh, thank you. Yeah. So let's talk about the third part of our format, that is the body of the article. तो इस पे होते हैं हमारे मेन आर्ग्यूमेंट्स, सपोर्टिंग एविडेंस एंड एनालिसिस. तो जो मेन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इन दिस सेक्शन वी रिप्रेजेंट आवर पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑफ आवर आर्टिकल. से फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग ऑफ द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज. तो इन 3 नए क्रिमिनल लॉज में क्या है, तो पहले तो मैं वो लिखूंगी. फिर आई ट्राई टू गिव सपोर्टिंग एविडेंस. नाउ मेरा आर्टिकल में सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, बिकॉज 3 न्यू क्रिमिनल लॉज में क्या कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूँ. तो मेन बॉडी में हम सपोर्टिंग एविडेंस बाद में डालेंगे. अब डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे, कई बार हो सकते हैं सपोर्टिंग एविडेंस. सपोर्टिंग एविडेंस क्या होता है? सपोर्टिंग एविडेंस होता है स्टैट्यूट्स, रेगुलेशंस या केस लॉज या स्कॉलरी आर्टिकल्स जिनको आप प्रेफर कर रहे हो, जिनसे आप अपना आर्ग्यूमेंट प्रूव या डिस्प्रूव कर रहे हो. तो वो होता है सपोर्टिंग एविडेंस. और फिर आता है एनालिसिस पार्ट, जहाँ पे आप डिस्कस करते हो, इंटरप्रेट करते हो एक लीगल प्रिंसिपल को. तो मान लीजिए हम लिख रहे हैं 3 न्यू क्रिमिनल लॉज पे, तो आई फर्स्ट राइट द इंट्रोडक्शन. फिर मैं बैकग्राउंड लिखूंगी कि इंडिया में मान लीजिए सिर्फ आईपीसी की बात कर रही हूँ मैं, आईपीसी 1860 से चल रहा था, उसमें ये स्पेसिफिक प्रोविजंस थे, उसमें कई बार अमेंडमेंट्स हुए. सीआरपीसी है, सीआरपीसी में कई बार अमेंडमेंट्स हुए. इंडियन एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट को बार बार हमें अमेंड करना पड़ा टू मीट अप विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ द करेंट वर्ल्ड, दैट इज द मॉडर्नाइज सोसाइटी, जहाँ पे आईटी इतना यूज होता है. तो मान लीजिए ये मेरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ गया. फिर मैं मेन बॉडी पे जाऊंगी, जहाँ पे मैं सब हेडिंग्स बनाऊंगी. द फर्स्ट वन विल बी द मान लीजिए हम लिख रहे हैं आईपीसी वर्सेस बीएनएस, फिर हम लिख रहे हैं सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस, फिर हम लिख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट वर्सेस भारतीय साक्ष्य अधिनियम. तो मान लीजिए हम इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं.
तो मैं ये 3 सब हेडिंग्स बनाऊंगी और फिर इनमें इंफॉर्मेशन लिखूंगी कि आईपीसी में क्या होता था एंड हाउ बीआरएस इज डिफरेंट फ्रॉम आईपीसी, क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, क्या अच्छी चीजें हुई है, अभी भी अगर कोई लूप होल्स है मैं उसको एड्रेस करूंगी। और अगर मैं बोल रही हूँ कि इस चीज की पनिशमेंट अभी भी इतनी दी गई है एंड आई फील दैट इज अ लूप होल, तो उससे रिलेटिंग सपोर्टिंग एविडेंस किसी स्कॉलर ने भी बोला होगा या फिर किसी जस्टिस ने बोला होगा या फिर किसी ने कोई कमेंट्री की होगी, मैं उसको भी साथ में लिखूंगी, उसको साइट करूंगी एज अ सपोर्टिंग एविडेंस। दैट इज व्हाट गोes in your main body where you write what you want to explain it to your readers. You provide सपोर्टिंग एविडेंस दैट इज केसेस या फिर कोई अगर फॉरेन रूल है या फिर कोई रेगुलेशन है या फिर कोई स्कॉलरी आर्टिकल है दैट यू वांट योर रीडर टू गो थ्रू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर, वो आप प्रोवाइड करोगे एंड फिर आप उसे एनालाइज करोगे जिसपे आप इवेल्युएट करोगे द लीगल सोर्सेस एंड एक्सप्लेन करोगे उनका रेलेवेंस टू योर रिसर्च। फिर आता है द फोर्थ पार्ट दैट इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आता है समरी एंड इम्प्लीकेशन। सो समरी बेसिकली इज द concise summary of your whole article कि आपने जब आर्टिकल लिखा तो आपको क्या पता चला उस टॉपिक के बारे में, आपको क्या समझ आया एंड इससे आप क्या फिगर आउट कर सकते हो, क्या ड्रा आउट कर सकते हो। मान लीजिए मैं 3 न्यू क्रिमिनल लॉस के बारे में लिख रही हूँ एंड आई से दैट इन माय समरी कि दिस वाज अ चेंज दैट वाज नीडेड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, हाउएवर अभी भी कुछ लूपहोल्स है जो मैंने आइडेंटिफाई किए व्हिच नीड्स टू बी addressed. So that is what my summary will be. Apart from that, we also write the implications. तो 3 नए laws आए हैं and our criminal system a lot has completely changed, but yes, has changed to a certain extent क्योंकि सबको whether it be the students and whether it be the teachers, whether it be the advocates, whether it be even the legislators and the judges, उनको भी ये 3 नए क्रिमिनल लॉज फिर से पढ़ने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड कि किस सेक्शन में क्या चीज जाएगी, अब कौन सी चीजें कहाँ लगेगी। सो इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन है कि यस देयर विल बी सर्टेन हार्डशिप्स फॉर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल, बट जो मास है, जो सोसाइटी है, दैट इज ऑब्वियसली इम्पैक्टेड इन अ much more positive manner. So that will be my implication. So basically when we write our research article and जो आप लिखोगे even for legal with you'll first write an abstract, then you'll write the keywords, फिर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे और बैकग्राउंड लिखोगे, देन आपका मेन बॉडी आएगा जिसपे आप जो भी चीजें डील करना चाहते हो आप उसको हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बना के लिखोगे एंड देन इट विल बी द कंक्लूजन पार्ट जहाँ पे आप समरी लिखोगे और फिर आर्टिकल एंड यू राइट द एप्लीकेशंस। नाउ जब आप अपने आर्टिकल लिखते हो देयर आर वेरियस सोर्सेज दैट यू go to. So Rishabh, slide. So there are various sources of information that you use. तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ जो होता है वो होता है स्टैट्यूट्स, रेगुलेशंस, केस लॉज, कॉन्स्टिट्यूशंस, ट्रीटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। ये होते हैं ओरिजिनल सोर्स ऑफ, डायरेक्टली एस्टैब्लिश करते हैं किसी लीगल रूल और प्रिंसिपल को लेके। इसमें कोई भी थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव नहीं आता है, ना ही कोई टेक्स्ट बुक, ना ही कोई ऑथर होता है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर रहा होता है। सो ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ लॉ जैसे कि आपके बुक्स हो गए, आपके बेयर एक्ट्स हो गए, आपके केस लॉज हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ट्रीटी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, ये सब आते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ में। देन आता है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ जो कि हम ऑफन रेफर करते हैं, which are textbooks, scholarly articles, research papers, commentaries, etc. तो जो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, ये वो सोर्सेज होते हैं जो एनालाइज करते हैं प्राइमरी सोर्सेज को एंड दे ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ लिटिल सिंपलर मैनर। सो दैट इज व्हाट सेकेंडरी सोर्सेज आर। एंड द थर्ड इज टर्शियरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब टर्शियरी क्या होता है? ये प्राइमरी और सेकेंडरी के मिक्स होते हैं, दैट इज इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज, जो आपके डिक्शनरीज हो गए, लीगल गाइड्स हो गए, लीगल हैंडबुक्स हो गए जिसपे लॉ भी रहता है और एनालिसिस भी होता है लॉ का जो वेरियस ऑथर्स ने दिया होता है, वो होता है आपका टर्शियरी रिसर्च सोर्स। ऋषभ, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड?
And while you're writing your research article, you usually refer only to primary sources. You try to stick to only the primary sources because they are the original sources of law, and उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. बट कई बार अगर आप सेकेंडरी सोर्सेज लिखते हो तो यू ट्राई एंड साइट दैट प्रॉपरली, बिकॉज सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं वो किसी थर्ड ऑथर का पर्सपेक्टिव होता है ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, राइट. तो मान लीजिए कि आपने किसी का स्कॉलरी आर्टिकल साइट किया है, तो अगर आप उसका आइडिया यूज कर रहे हो, अगर आप उसका उसकी कही हुई बातें यूज कर रहे हो, डेफिनेटली हैव टू साइट देम, राइट. इफ यू डू नॉट साइट देम, क्या होता है कि आपका कंटेंट प्लेजराइज होता है. सो प्लेजरिज्म जो है, इट इज नॉट जस्ट समथिंग रॉन्ग, बट इट इज ऑल्सो वेरी अनएथिकल टू डू, एंड इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू प्लेजराइज समवन एल्सेस वर्क, राइट. तो प्लेजरिज्म अवॉइड कैसे करें? सीधी सी बात है, अगर आपको प्लेजरिज्म अवॉइड करना है, साइट द रिसोर्सेज प्रॉपरली. मान लीजिए अगर मैंने किसी एक्स इंसान का आर्टिकल यूज किया है फॉर राइटिंग माय रिसर्च पेपर, I'll cite the source properly. That is, I have used XYZ line research by XYZ research scholar in his article, or in his article that was published here. That is how I'll cite. Apart from that, use quotation marks. अगर आप किसी की कहीं भी चीजें डायरेक्टली साइट कर रहे हो, मान लीजिए किसी जस्टिस ने कुछ कमेंट किया है, आप उसे डायरेक्टली यूज कर रहे हो, पुट देम इन कोटेशन मार्क्स. देन पैराफ्रेज अवॉइड करें. पैराफ्रेज करना, लोगों को लगता है कि अगर किसी ने XYZ लिखा है और हम उससे YZX कर देंगे तो हमारा प्लेजरिज्म खत्म हो जाएगा. नहीं, योर कंटेंट विल स्टिल बी प्लेजराइज्ड. तो अगर आप पैराफ्रेज कर भी रहे हैं तब भी डू नॉट फॉरगेट to give the original author the credit for his or her work. अगर आप कोई फैक्ट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने एनसीआरबी का डेटा यूज किया है अपने पर्टिकुलर रिसर्च आर्टिकल पे, तो लोगों तो जो भी कोई लोग आपके रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे, दे विल वांट टू वेरीफाई कि ये फैक्ट करेक्ट है या नहीं. सो फॉर दैट पर्पस, एंड ऑल्सो फॉर ऑथेंटिकेटिंग योर पर्टिकुलर फैक्ट, ऑलवेज साइट कि आपने कहाँ से लिया है. अगर आपने कोई ऐसा फैक्ट लिया दैट इज नॉट जनरल नॉलेज, तो उसे पर्टिकुलरली साइट कीजिए. मैनेज योर नोट्स. तो आई डोंट नो ऑफ एवरीवन, बट मोस्ट पीपल व्हाट दे डू इज, जब भी वो रिसर्च पेपर लिखते हैं वो साइड बाय साइड एक ड्राफ्ट भी रखते हैं जहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन करते हैं कि हमने, मान लीजिए ए पॉइंट है, हमने ये एक्सवाइजेड ऑथर के आर्टिकल से रेफर किया है. सो हम वो पॉइंट्स भी अपने पास रखते हैं. तो ऑलवेज मैनेज योर नोट्स. हमेशा एक अलग डॉक्यूमेंट रखो, या फिर अगर आपको हाथ से लिखने की आदत है, नोट बना के रखो कि हमने ये पॉइंट यहाँ से लिया है. और जब आप अपना रिसर्च खत्म कर दो तो क्या करो कि अपने नोट्स को गो थ्रू करो, टू साइट इट, तो उससे इफेक्टिवली साइट करो. नॉट ऑब्वियसली यूज प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स. कई सारे ऑनलाइन फ्री टूल्स भी आते हैं, पेड भी आते हैं, जैसे टर्निटिव है, सारे फ्री टूल्स आते हैं, डूबली चेकर आता है, ग्रामरली आता है, एंड देयर आर अ लॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट. किसी को भी यूज करो, पुट योर आर्टिकल देयर एंड सी इफ इट इज प्लेजराइज्ड और नॉट. क्योंकि बहुत बार बहुत सारी जगहों की गाइडलाइंस ये होती है कि आप X% से ज्यादा प्लेजराइज नहीं कर सकते. मोस्टली इट इज 5 to 10%. So even when you write your articles for us, आप 10% से ज्यादा प्लेजरिज्म के आर्टिकल्स नहीं पब्लिश कर सकते. So हमेशा सबमिट करने से पहले रन योर आर्टिकल थ्रू प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल टू एंश्योर कि आपका आर्टिकल ज्यादा प्लेजराइज नहीं है. एंड अगर है, फिर गो एंड साइन द रिसोर्सेज प्रॉपरली. एंड अगर तब भी आपसे ना हो, यू कैन ऑलवेज सी गाइडेंस. यू ऑलवेज हैव, आई एम टॉकिंग ऑफ योर इंटर्नशिप, आपके पास आपके गाइड्स है आपके ग्रुप पे, जो आपके एडमिट्स है. अपार्ट फ्रॉम दैट, यू हैव द होल टीम ऑफ लीगल विद यू इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. तो अगर आपको कहीं भी इवन ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि इस पे रिसर्च कैसे करनी है, या फिर आपको प्लेजरिज्म पे कोई इशू हो रहा है, द टीम इज ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट.
So that is it that I had to explain from my side, and I'm so sorry for the inconvenience caused to everyone today, Rishabh, and to all the students here, due to the network issues. And अब आपको अगर कोई भी query है, please feel free to ask me. Rishabh, you can stop sharing the screen, and the PPT will be shared to you all by today. If you have any query, yeah. Asia, you can. There are many places of tools. आपके group पे link आ जाएगा to the tools that are usually used. You can use Grammarly and Tubely Checker. These are something that I trust with plagiarism जो free है. अगर आपके पास paid tools है like Turnitin and all, well and good. You can use them as well. And Chaitanya, thank you so much uh, for your concern. I'm fine. And yeah, thank you. And if anyone has any other query, please feel free to ask. Rishabh, I don't believe there are any questions, so I guess we can end the session. Yes, ma'am. I think there is no any queries. Anybody who have any queries, kindly ask. Otherwise, we wind up the session. I think we end the session. Thank you so much, ma'am, for taking a such an understanding class on legal research and plagiarism. Also, thank you, participants, for joining this workshop. Thank you, everyone. Now, everyone can leave. Thank you so much, Rishabh, and thank you for joining everyone. Thank you.